श्रीभूमि के भारत बांग्लादेश सीमा पर कुशियारा नदी से बुधवार को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने भारत की सीमा सुरक्षा बल से संपर्क कर अब शव की शिनाख्त कर ली है। यह शव बांग्लादेश के जकीगंज के निवासी अब्दुल मलिक की बताई गई है, जिसके बाद कल रात ही श्रीभूमि पुलिस ने बीएसएफ के सहयोग से शव को नाव के जरिए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के हवाले कर दिया। 4 দিন আগতে ডেড বডি এটা পাইছিলোঁ। একৰ্ডিংলি বিএছএফে আমাক ইনফৰমেশ্যন কৰিছিল আৰু বিএছএফৰ সহযোগত আমি নি পোষ্টমৰ্টেম কৰিলোঁ। কৰি 3 দিন আমাৰ ৰাখিব লাগে, ৰাখি পোষ্টমৰ্টেম কৰি বিএছএফৰ লগে বিএছএফ বিডিআৰ লগত যোগাযোগ কৰি আজি হেণ্ডঅভাৰ কৰাইছে। নামটো কি আছে? আব্দুল জলিল। ঘৰ ক'ত আছিলে? জকিগঞ্জ থানাৰ আণ্ডাৰত। আজি কোনে কাৰ হাতত আপোনালোকৰ? আমি বিএছএফৰ যোগেদি বাংলাদেশৰ জকিগঞ্জ পুলিচ ষ্টেচনৰ মানুহক হেণ্ডঅভাৰ কৰিছোঁ। কোন ঘাটে তেতিয়া হস্তান্তৰ কৰা হৈছে? আমাৰ বিসৰ্জন ঘাটৰ।